Hi investors and traders, welcome back to the channel and wish you all the most wonderful year ahead. So साल 2023 शुरू हो चुका है, आज है 1 जनवरी 2023 और मैं आई हूँ, मैं आज सुबह से रिसर्च कर रही हूँ और सोच रही थी किस तरीके से आप लोगों के लिए एक बहुत ऑथेंटिक रिसर्च लेके आऊँ। तो मैंने कुछ किया है, अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट उससे पहले मैं अपने कुछ रिजॉल्व्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ जो मैंने अकॉम्प्लिशमेंट किए हैं ईयर 2022 में उसकी बात करती हूँ मैं। तो ईयर 2020 में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि वी वर्क क्वाइट एक्सटेंसिवली और हमारी जो यूट्यूब की जो मेंबरशिप है वो 27,000 से ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट टू बी 1 लाख, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमने की है यूट्यूब पे और कोशिश की है कि अच्छे स्टॉक्स दें, अच्छी रिसर्च दें, अच्छे से आप लोगों को एजुकेट करें। दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड ऑल दिस वाइल। उसके बाद I was the first female keynote speaker in Traders Carnival, which happened for the first time in the history of Traders Carnival in 10 years. That was another accomplishment of Stock Pro. We have almost taught many students this year. I think we have highest number of students whom we have educated this year. And now the year 2023, my resolve is to continue educating people on YouTube for free wherever I can. And also, I'm not going to be actively trading now because I'm switching over to algo trading. We have developed extremely highly accurate and well rewarding algos. They should be ready for deployment very, very soon. I mean, as soon as a week or 10 days time, and I'll be showing you and sharing with you all the performances. So remain alert, and I'm sure if it consistently give us, right now it's in the trial, we've been running trial for quite some time, and now we'll be deploying good amount of money and then doing the consistency test on the algos. And there are many more things that are coming up. We'll be coming up with a special course on Back Nifty options because that has been a huge, there has been a huge demand on Back Nifty options. But whatever you get in the market right now, I mean, I was saying that we will give you a long-term support and a long-term handholding before for Back Nifty options. So many things lined up, and my personal determination is to really put my all energy in selecting the best stocks for you people. My resolve is that no matter what, my stop loss, your stop loss should not hit. Okay, because I'm an investor, and if you invest, on my recommendation or my research, it's, like I will try my level best, not so that I can give you a plan where your stop loss doesn't get hit. So these are my personal resolves. All said and done, अगर हमारी health अच्छी नहीं है तो कोई भी plan, no matter what we make, is of no use. So definitely I would say I'm going to take 100% care of my health. You also take care of your health. Not only your health, your parents' health, your friends' health also you need to take care. So let me start today's topic is how I have filtered, I have filtered some stocks for you which you can hold for the year 2023, and you can have a plan for investing or whichever way you want to do. तो क्राइटेरिया क्या था इस जो रिसर्च मैंने आज की है सुबह से, इसका आइडिया क्या है? Idea is to find out where institutions have been investing recently. तो मैंने क्या किया है, ये जानना चाहा है कि इन इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे हिसाब से हमको हमेशा उस डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ इंस्टीट्यूशंस जिस डायरेक्शन में इन्वेस्टेड होते हैं। आज के इस रिसर्च में मैंने ये पता लगाने की कोशिश करी है कि कहाँ पे फ्रेश पोजीशंस इंस्टीट्यूशंस ने बनाई है। तो मेरे हिसाब से 2-3 सेक्टर्स जो निकल के आए हैं, एक तो बैंकिंग सेक्टर, दूसरा सीमेंट सेक्टर और तीसरा है auto ancillary, and mainly I would say it is not even ancillary, it's the tire business. That's where institutions have deployed a lot of money. And the एक और जो सेक्टर जहाँ पे मुझे लगता है कि एक ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूसली अपना पैसा लॉन्च कर रहे हैं या डिप्लॉय कर रहे हैं, वो है केमिकल सेक्टर। तो चलते हैं, मैं आपको अपना क्राइटेरिया एक्सप्लेन करती हूँ, मैं पूरी रिसर्च आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम प्राइस की बात करेंगे।
अगर आपको प्राइस समझ में आता है या आप अपना एक कोई सिस्टम बना सकते हैं, उसके चलते आप उन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं जो, बट प्लीज कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन मत ले लेना, राइट? दिस इज नॉट अ सजेशन फॉर ऑप्शंस। सो मैंने क्या किया, मैंने मनी कंट्रोल पे जाके मैंने टॉप म्यूचुअल फंड्स निकाले और उनमें से मैंने क्या किया, वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। मैंने टॉप म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं और उनमें से मैंने ढूंढा है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने कंसिस्टेंट रिटर्न दी है। जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, देन मिराई एसेट, देन कोटक फ्लेक्सी कैप, देन पराग पारिक, जिन्होंने कंसिस्टेंसी अराउंड 20 के आसपास मेंटेन की है, मैंने उन म्यूचुअल फंड्स को पिक किया है। फिर उन म्यूचुअल फंड्स का पूरा पोर्टफोलियो निकाला है और उन पोर्टफोलियोज में देखा है कि लास्ट मंथ में दिसंबर के महीने में जहां मार्केट इतना टर्बुलेंट था, इन इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, कहां पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और ऐसे करके मैंने एक एक्सेल बनाई है, वो मैं एक्सेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। So this is the Excel that I have made, Canara, Rebeco, this is Parag, Parik, this is Access Midcap, this is Kotak Emerging, Invesco, Access Small Fund, SBI Mid Small Cap, then this is Canara, Rebeco, Equity Saver. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mutual funds I have actually scanned and they're pretty good performing. They have almost like a CAGR of 20% in last 3 years. Out of them, I found that which are the exact stocks where the institutions are, or these mutual funds are increasing the holdings. So there are about 118 such stocks that I've found where the mutual funds are 110, you can say, where mutual funds are increasing their holdings. Now, after that, what I did, I wrote down, I made a table for each of them, and I tried to figure out which is the stock where each of these mutual fund is increasing their stake. इसके बाद मैंने क्या किया है, हर एक म्यूचुअल फंड में जहां जहां फंड इंक्रीज हो रहे थे उनको मार्क किया और ये जानने की कोशिश की है कि ऐसी कौन से स्टॉक्स है जहां पे लगातार हर एक म्यूचुअल फंड जो है अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रखा है। तो सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे आया PIIND, दूसरा आया ICICI बैंक। इनफैक्ट आप देखोगे ICICI बैंक 8 में से 6 म्यूचुअल फंड्स ने इनमें अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है। उसके बाद मेरे रडार पे आया HDFC बैंक, जहां पे 4 म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एक स्टॉक मेरे रडार पे आया एबॉट, ABBOTT, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 out of 8 mutual funds, 5 mutual funds have increased their holdings into this particular stock. उसके बाद एक स्टॉक जो मेरे रडार पे आ रहा था वो था हनीवेल ऑटो। अगेन इसमें भी 4 म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक जो है इंक्रीज किया है। उसके बाद एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक था विनाती ऑर्गेनिक्स। सो विनाती ऑर्गेनिक्स में भी एटलीस्ट 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो ये मैं एक इलेबोरेट टेबल मैंने बनाई है और इस टेबल को मैंने क्या किया है, लाके अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जिन स्टॉक में मतलब एटलीस्ट 50% म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, मैंने वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे लेके आई हूँ। अब उसको मैंने बैठ के फिर प्राइस को रीड किया है। मैंने कोशिश करी है प्राइस को रीड करने की और ये जानने की कोशिश की कि किस स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है। या मैं आपको ऐसे बोलूंगी कि आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये रीसेंट होल्डिंग इंक्रीमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली ये सारी कंपनीज बहुत बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक है जो खराब हो, ऐसा नहीं है कोई भी। तो आप अपना एक प्लान बना सकते हैं और उस प्लान के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये मुझे आई थिंक ये मेरा टॉप पिक रहेगा फ्रॉम ऑल द स्टॉक्स। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक ट्रायंगुलर वेज बन रहा है और इनफैक्ट out of 8 mutual funds, almost 6 have increased their holdings in Balakrishna Industries. अगर होल्डिंग इंक्रीज हुई है बट स्टॉक में ब्रेकआउट तो आया नहीं है, धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं बट ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, मींस कभी तो ब्रेकआउट आएगा ना, जब मार्केट कंडीशंस करेक्ट होंगी, सही होंगी, तब इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं
और मुझे देख के ऐसा लगता है कि इसमें कि जो ट्रायंगुलर वेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये एक बहुत सॉलिड ब्रेकआउट के फॉर्म में आपको दे सकता है। अब देखो ट्रेडिंग प्लान में आपके ऊपर छोड़ती हूँ कैसे। आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो 2434 पे बाय करना चाहते हो, आप 2717 के ऊपर बाय करना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि ये स्टॉक नीचे जाए थोड़ा सा 1750 के आसपास जाए, वहां आप बाय करना चाहते हो, वो प्लान आप बना सकते हो। या कुछ क्वांटिटी आप अभी लेना चाहते हो, कुछ बाद में लेना चाहते हो, या कुछ ही जब नीचे जाता है तब लेना चाहते हो, तो वो चॉइस आप खुद बना सकते हो। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि टॉप ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स में जो है, जो एक महीने में है व्हेन मार्केट वाज सो टर्बुलेंट, the holdings have increased in these particular stocks. So जो मैं आपको एक लिस्ट दिखा रही हूँ, हनी ऑटो वेल, इंडिया होटल्स, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, विनाती ऑर्गेनिक्स, persistent system, Medanta, which is global health, PIIND, then JK Cement, then HDFC Bank, Abbott India and ICICI Bank. ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे कंटिन्यूस होल्डिंग हुई और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इंक्रीमेंट हुआ है। इनफैक्ट आई हैव सीन ICICI's stock is a count where most of the mutual funds have increased their stake. So now we can have a look at what could be our trading plan. A very simple trading plan could be that if it goes above 958 or 960, we have a good opportunity to take an entry. Or another possibility is that you can wait for a correction. If it goes to about 670, you can accumulate some more quantity. So how do you want to do it? I leave it up to you. But जो मैंने खुद स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उसमें एक तो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज है और एक हनीवेल ऑटो इंडस्ट्रीज। If you look at the Honeywell Auto Industries, I'll just show you how the price looks like. Very, very uniformly respecting this trend line. There was a little, sometime it broke this trend line, but immediately bounced back. Again, it's respecting. So in case the stock price goes above 44,500, you may get a good opportunity, or you can wait for it to come down to about 40,500. You can make an entry because it has been respecting this trend line for almost like from 2016, which is about 6 years. It has got absolute good chances of respecting it still. तो आप वेट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आए 40,200 300 तक, वहां पे आप एक्यूमुलेट करें, या प्राइस 44,500 के ऊपर जाता है तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। चॉइस आप खुद बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा मल्टीनेशनल स्टॉक है ये, और डेफिनेटली आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेदांता, राइट? दिस इज मेदांता विच इज नथिंग बट ग्लोबल हेल्थ केयर। कोई खास प्राइस एक्शन है नहीं, ये वीकली चार्ट है, और मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने मेदांता की बात की थी। स्टॉक बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। I'm a premium customer in Medanta Hospital. I know the kind of facility they provide, and if you go to Medanta, you will see there is a flood of patients, right? So I don't know what the future has, but people are getting very health cautious. Even if they are not well, they want to take precaution for their health. And hence, I believe hospital business should really do well. So Medanta is the third stock on my radar. Honey Automobile, Balkrishna Industries, Medanta. Next is HDFC Bank. So most of the mutual funds had increased their stake in HDFC Bank. If you have a look at it, there is a triple top, right? 18th October 2021, it made a high of 1725. Then it made a similar high on 4th April 22. And now it's consolidating and it's sideways, almost like for 1 month, 1.5 months, it's going sideways, almost like 2 months, you can say. In case it breaks 1725, it's going to break its lifetime high. And when that happens, I for sure will expect a movement of 10%. Agar HDFC Bank. Now see, one is that you can have a look at the price. Okay? Price is sidewise. It's not falling down. There are days when market falls, freely fall. There are days when market goes up, but the stock is not giving any breakout. Why there is no breakout? Because this barrier is not getting crossed, 1725.
Why it's not going down? Because mutual funds are increasing on their stake on every day. So that is why you see a range bound happening here. But at the same time, you can have a look at it that the price is continuously shifting in the upward direction. The buyers are shifting the price slowly up. So breaking the lifetime high, that to be in the third attempt, is going to lead it to about 10% increase. So that's my fifth stop. Then I have Abort India. Abort India, I don't know how many of you remember, I have given it to our members for a positional buy. Even on the 7th of October, on the free channel also, I have given Abort India, right? See here, on 7th of October, I have given a buy on Abort India. And I have given in our premium membership also for a buy above 19,420 for a target of at least 21,000. It has absolutely crossed that. It is at 22,166. Now, if the stock breaks, because almost every mutual fund has increased their holding in Abort India. If I understand, Abort India is basically a pharma stock. Like they are into not diagnostics, but they are into, so basically they are medical device company. Like they basically have machines for finding out the, like continuously monitoring the blood sugar. They are basically medical device company. So that's a very niche segment. A lot of companies are there, but bot has a very specialized, you know, field in which it exists. So this is about India. The graph is looking very, very promising to me. If you just have a look at the little higher time frame, you will see the one. It's like a cup and handle, and if it has already broken this high, again, if it crosses above today's high, which is this recent high, which is about 22170, I'm expecting a move till about 23,900. And once it crosses 23,900, which has been its lifetime high, I'm expecting it to not be less than 10% move. That means 2,400 plus 2,000 means at least 26,000 is what I will be expecting. So Abbott and Balakrishna will remain on my top list, but rest are also extremely good. Honey Autowell, Balakrishna, Medanta, HDFC Bank, and Abbott India. These are 5 stocks that I've picked up for the year 2023. Keep accumulating. They're extremely rock solid stocks with rock solid fundamentals. You can keep accumulating on every dip and think about at least 5 years, or I would say think about 2030. डोंट से आपने दिया था और ये 100 पॉइंट नीचे चला गया और 200 पॉइंट नीचे चला गया. ये सोचो कि अगर 200 पॉइंट नीचे आ गया तो मैं और एक्यूमुलेट करूंगा, बिकॉज दिस इज फंडामेंटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक. So you can check the fundamentals of each one of them on screener.in. You can do your own analysis, but I have spent good amount of time to find out where institutions are increasing their holdings. So this is my research. I'll just quickly represent once again. So one stock that I have missed out is Vinati Organics. You can watch it. Price doesn't tell me, it's telling me that it's been range bound for quite some time, but in case it crosses above 2200, we can definitely expect a target of 2400, and above 2400 we can definitely expect a target of 3000. This could be the target of Vinati Organics at least in 1 year. So 6 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं. विनाती को भी मैं ग्रीन कर देती हूँ. हनी ऑटो वेल, then Balakrishna, Vinati Organics, Medanta, HDFC Bank, and Abbott India. These are 6 stocks which are according to me, will lead the way. Definitely will become multi-baggers slowly, gradually, but just mind when you are accumulating it. Do keep in mind these are extremely good stocks, but when you calculate, when you add, you have to take that responsibility. But I have shared the criteria. Why did I select them? Price. And what is my criteria? Because institutions are increasing their holding in these stocks. Remain connected. I have filtered some more stocks which are basically from the cash segment, but they're extremely good stock and probably unheard stocks.
I will be sharing my research very soon about them as well. So stay tuned. All the best, and I wish you the wealth, or the you know huge amount of wealth in the year 2023 along with stockpro. So all the best, guys. Hope you had good time in 2022 and much million times better time in 2023. All the best. See you in the live trading 10 to 11 every day. Bye bye.